Good afternoon, Nikhil. Good afternoon, ma'am. So I think due to some technical issue, I couldn't start the class earlier. So are other students joining as well? Ma'am, I just text them. All right. All right. Yes, Sushant, Nikhil, and Karan. So we were discussing a few current affairs yesterday. So continuing with that, I wanted to discuss another important news. You must have seen it online in the newspapers that Uttar Pradesh has come up with a population policy, right? So did you read that news? मैम क्या? अभी आपने बेटा न्यूज पढ़ी होगी, यूपी में उन्होंने एक पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई है, लाइक दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, जिसमें दे हैव अनाउंस्ड No, ma'am. somebody has more than 2 children, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि you won't be eligible for local elections, so on and so forth. तो चलो उसका आज हम देख लेते हैं. I'll just share the screen with you. हाँ जी बच्चे, so this is it. Right, so UP government has come up with this policy to control population. Right, so this is a draft bill for now, and probably most probably जैसे पहले जो भी कोई law लेकर आया ना, that is in the form of a bill. Then once it is passed in the, let's say, the legislature house, जो भी है जैसे states में विधान सभा होता है, after that it becomes an act. Act is a law, right? So जो इनका अभी इन्होंने draft bill upload किया है for suggestions from the public, and it is about more targeted towards population control, right? So इसमें इन्होंने थोड़े से ऐसे रखे हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी का कुछ रखा है, गवर्नमेंट जॉब्स का रखा हुआ है, right? Then they have this condition about that you won't be able to, let's say, participate in the local elections as a contestant if you have more than 2 kids. So I'm trying to find more comprehensive one. So yes, even they have promised rebate on electricity bills, home loans, taxes, people who will follow, right? Then it is also going to limit the ration card unit to 4. तो आपको पता होगा जैसे जो हमारे वैसे राशन कार्ड तो सबका, it is more used as a proof of identity. However, it is also used, let's say, for the people who are living in poverty, right? The people who are in the below poverty line कैटेगरी, तो उनके लिए ना आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट प्रोमिसेस देम फ्री फूड ग्रेन्स, ठीक है? उनका पर मंथ अलॉटमेंट होती है कि आपको राइस इतने पर केजी, 2 रुपीज या ऐसे होता है उसका प्राइस, पल्सेस 3 रुपीज पर केजी,
wheat 1 rupee per kg, ऐसे करके ना उनको बहुत ज्यादा सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन्स आर प्रोवाइडेड सो दैट नोबडी गोज हंग्री। तो उसके लिए दे नीड अ राशन कार्ड, एंड अभी राशन कार्ड को जैसे आधार के साथ भी लिंक कर दिया, राइट। तो अब ये वाली पॉलिसी रूल में भी यही है कि जो राशन कार्ड है वो 4 पीपल के लिए ही वैलिड होगा। सो दिस इज अगेन टू encourage only 2 children and not more, right? Then they are going to give soft loans for construction. Soft loans होते हैं loans जिनका बहुत ही low interest rate होगा, right? So these are the various incentives which will be given under this birth control policy. This is just to limit the population, right? Then they will also provide subsidy whenever a land is purchased or building is purchased या कुछ भी ऐसा कोई काम करना है. Then even for health care a lot of facility will be given, right? Insurance coverage of the spouse, right? For the female government employees, 12-month maternity leave with full salary. And yes, even for couples who belong in the that BPL category, that is below poverty line category, so and if they have only one child, so they will also get attractive incentives, and that includes in case of a boy a lump sum amount of 80,000 rupees will be given, and in case it is a girl, so a lump sum amount of 1 lakh will be given to the couple. So this is basically to encourage people to go in for lesser smaller families, right? So I'll find a better इसका एक और भी था, हाँ जी, एंड इसका काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं दैट दिस इज मोर विद द फोकस ऑन द नेक्स्ट ईयर इलेक्शन. नेक्स्ट ईयर पंजाब में भी इलेक्शन होनी है एंड यूपी में भी इलेक्शन होनी है. So all you will come across these articles which are criticizing this move. वैसे यूपी is one of the densely populated states of India, right? Even in terms of area it's quite big, right? And also in terms of population, and per square kilometer कितने लोग वहां रह रहे हैं उस टर्म में that is called density of population. तो उस टर्म में भी यूपी में काफी density of population है, राइट? तो इधर इनका टोटल जो फर्टिलिटी रेट होता है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन अ वुमन विल हैव ड्यूरिंग हर फर्टाइल ईयर्स और ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव ईयर्स. तो अभी वहां पे 2.7 है, राइट? एंड दे वांट टू ब्रिंग इट डाउन टू 2.1 by 2026 and 1.9 by 2030, right? So this is again a measure for population control and also elections political move तो है ही है. एंड इसमें वही जो हमने अभी इंसेंटिव्स डिस्कस किए हैं वैसे इन्होंने काफी इंसेंटिव्स बीच में इंक्लूड किए हैं फॉर पीपल हु विल गो इन फॉर ओनली 2 चिल्ड्रन, राइट? एंड जो ओनली 1 चाइल्ड के लिए जाएंगे उनके लिए अलग से इंसेंटिव्स हैं. So this was one of the current news which I wanted to discuss. So beta, in terms of sports, there was another event which took place. So आपने वैसे you told me that not much into football, but this is also related to football only. So I'll share the screen and show it to you. So this is about the tournament called Copa America, right? So Copa America, it is the South American Football Championship, right? So the main is men's football tournament among all the national teams from South America. So it is the oldest and still running international football competition. No doubt, अभी जैसे FIFA is more famous, and अभी जो European Championship हुई है that is more famous. However, this one is the oldest. And अभी इस बार current champions are Brazil. So अभी इसमें जैसे जो हमारे फेमस प्लेयर्स हैं, एक तो लायनल मेसी है, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ हिम, ही इज फ्रॉम अर्जेंटीना, राइट? सो इवन ब्राजील के काफी कई वेल नोन प्लेयर्स हैं. So usually there are 12 or 10 or 16 teams, right? And again they have a tournament, then the semi-finals, and then the finals.
So recently, yes, Argentina won it recently, right? And it won it after quite some time. क्योंकि इनके जो एक्चुअली जो क्या होता है, जैसे इवन इन इंडिया IPL is at times given more importance than what we have, the national championships, right? यहाँ जो हमारी इंडियन टीम की आगे होती है, IPL के राउंड ज्यादा हाइप होती है. Similarly, in the world of football also, जो इनके फुटबॉल क्लब्स हैं, have you heard of the various football clubs that are there in Europe? Anybody? आपने उनकी टी-शर्ट्स वगैरह काफी देखी होंगी, काफी ऐसा मर्चेंडाइज आता है related to the football clubs. हाँ जी बच्चे, so has anybody heard of these football clubs? Barcelona, Manchester United. Yes or no? हाँ जी बच्चे, yes करण, निखिल, सुशांत. Yes, ma'am. हाँ जी, सुना होगा आपने. तो इनका पता है, like even these players, they are at times criticized कि they are able to perform better in those club championships rather than the national championships, right? जैसे अगर हमने इंडिया के साथ compare करना हो, just to give you a parallel example, right? This might not be true. Then what happens in India? At times, our players, they perform better in IPL as compared to, let's say, the national games or our international tournaments, जो हमारे टेस्ट मैच होते हैं या ODIs होते हैं, राइट? तो इसका काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म होता रहता है. सिमिलरली इवन दे आर क्रिटिसाइज के क्लब्स में तो बहुत अच्छा प्ले करते हैं, जैसे हमारा लायनल मेसी हो गया, देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया, देन ब्राजील से रोनाल्डिनो है, राइट? एंड कई बार ये अपनी जब कंट्री के लिए खेलते हैं तो दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म एज वेल, right? However, this time Argentina did well. It won the tournament, and Argentina का जो star player है, that is Lionel Messi, right? So this was again one big news which I wanted to share and just related trivia with you. So otherwise, बच्चे, yes, you tell me anything you might have heard something in news these days. हाँ जी बच्चे, anything you might have heard, anything you might want to share. अभी कुछ आजकल न्यूज नहीं पढ़ रहे? Have you started preparing for the exams? Yes, ma'am. All right. So and completed your assignments as well? Yes, ma'am. All right, that is wonderful. So, Bachcha, yes, I wanted to ask you if any of you has the question paper for the first semester. English का किसी के पास होगा question paper by chance? मैम देखना पड़ेगा. हाँ जी, आप चेक कर लेना, because I was trying to look for it online, तो मुझे कहीं मिल नहीं रहा. Maybe they haven't uploaded it yet, right? So in case any of you has it, please share it with me, right? And you may ask your classmates as well in case they have. मैम BR पेपर्स पर मैम होगा अवेलेबल आई थिंक. मैं बेटा वही वाली साइट ना चेक करी थी, BR पेपर्स, उसमें 2019 तक के तो अपलोडेड हैं, उसके आगे नहीं है अपलोडेड. ओके मैम, अगर मेरे पास होगा तो मैम जरूर मैं सेंड करूंगा आपको. हाँ जी बिल्कुल, अगर इन केस यू, एंड ऑल्सो अगर आपको कोई ऑनलाइन और कोई सोर्स मिलता है जहाँ पे हो, यू कैन शेयर दैट लिंक विद मी एज वेल, ओके. राइट? सो दैट वाज ऑल आई वांटेड टू रिक्वेस्ट. सो बच्चे, दैट इज इट फॉर द क्लास टुडे. अभी हमारा आज बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इशू थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, but no worries. So see you next week. We have the last class on 20th, right? So next Tuesday. So in case you have any particular topic in mind, let me know, we can discuss that one. All right. So that will be it. I'm ending the class and see you next week.